Hello dear students, this is Priyanka Arora welcoming you all once again to Maths online class. Yes, all my dear students of class 5th, I hope you all must remember that in my last lecture I have explained you the remaining questions of exercise 11B, that is from question number 4 to question number 7th of exercise 11B. Then after that I have also explained you all the figures of exercise 11C and then question number first of exercise 11D. So these all topics I have covered in my last lecture, and today I will be teaching you that what is volume and how we have to solve the questions related to volume. That we will cover from question number 2 of exercise 11D. So let us begin with the remaining questions of exercise 11D. Yes students, first of all we will discuss that what is volume. As I told you in my last video that I will be explaining you about the topic volume in the next video. So today firstly we will discuss about the topic volume. The volume is amount of space occupied by any solid object is called as volume. Okay, like this is a solid object, a matchbox. So if I place this solid object on my palm, then whatever space this matchbox is covering is called as the volume of this matchbox. Okay, so the amount of space which this matchbox is covering is known as the volume. Fine. Now the volume of any object, like this is a cuboidal object. Okay, this is a cuboidal object and the basic shape of this is rectangle. Then from rectangle this solid shape has made, that is cuboidal. Okay, now this cuboidal shape has length, breadth and height. So three parts are there. This is called as the length. Okay, this portion is called as the breadth and this one is called as the height. Fine. So as I told you, in rectangle there was only length and breadth, but if we talk about the solid figure cuboid, then there are three parts, that is length, breadth and height. Okay, and there I told you that in area we put the square unit, then in volume we put the cubic unit, as I told you in question number first also, that in all the parts if you remember we have put there the unit CU unit, that is cubic unit. Same in the case of cube. Okay, cube also has the cubic unit and there we have only the sides, side in cube, but in cuboidal object there is length, breadth and height. Okay, so you remember this thing, that the amount of space occupied by any solid object is called as its volume. Keeping this thing in mind, we will begin with question number 2 of exercise 11D, chapter number 11, perimeter, area, volume and maps. So students, this is your question number 2 and it is find the volume of solid with the given dimensions. The dimensions are given here in this solid figures and we have to find its volume. The formula of finding the volume of cuboid is length into breadth into height, and the formula of finding the volume of cube is side into side into side. So you have to remember these two formulas for solving this exercise. In exercise 11B, I told you to remember the formula of area of rectangle and the area of square, that was length into breadth, area of rectangle, and side into side in area of square. But in this particular exercise you have to remember the volume of cuboid and the volume of cube. So the volume of cuboid, as I told you, length into breadth into height, and the volume of cube is side into side into side. So see, this first figure is the cuboid. Okay, where you can see length is there, breadth is there and height is there. So this is the length, this is the breadth and this is the height of cuboid. So keeping this dimension in our mind, we will be putting the formula of volume of cuboid. So see, here you will write length is given here as 3 meter, breadth which is given in the figure is 8 meter and height is mentioned in the figure as 3 meter. So we will find out the volume of and the
name of the shape is cuboid. Okay, and as I told you, the formula is length into breadth into height. 3 dimensions are there. So put the value 3 meter, 8 meter and again 3 meter. So these are the 3 dimensions. Now we will multiply it. So 3 into 3 is equals to 9 and 9 into 8 is equals to 72. Here you can see, students, that 3 units are there. Meter, meter, meter. 3 units are there. So 3 means cubic. So Cu dot meter. Okay. Cubic unit. I told you there in area square unit was there. 2 units were there. So square we mentioned as SQ. If 2 units are there, then it means square. If 3 units are there, then it means cube, and the short form for writing cube is CU. Okay, that's why we are mentioning here CU, and the unit which is given here is meter, so CU meter. Now the next shape, here you can see that the length, breadth and height is 6, 6, 6. When all 3 are the same, then you understand that the shape, the solid shape is cube. Okay, so here the side of cube is given as 6 meter. So we will be putting the formula of volume of cube. So the volume of cube formula will be side into side into side. Fine. So here we will multiply the side only 3 times. So 6 meter into 6 meter into 6 meter. So 6 6 is 36 and 36 into 6 is equals to 216. Again CU meter. 3 times the unit meter is coming. So that will be written as 3 means cube. So CU and then dot and the unit which is given meter. Next, C part. It is again 3 different dimensions, 5 meter, 3 meter, 10 meter. So if different dimensions are there, then you understand that the given shape is the shape of cuboid. And for cuboid, I told you the formula length into breadth into height. Okay. So here the length will be 5 meter. This line will be the length. This will be the breadth. So the breadth here is 3 meter. And the height is given as, this is the height of the cuboid, that is 10 meter. So simply we will find the volume of cuboid. So the volume of cuboid formula will be length into breadth into height. So the length is 5 meter, breadth is 3 meter and the height is 10 meter. So 5 3s are 15 and 15 into 10 is equals to 150. Again 3 units are there, volume is there, so it will be cubic meter. Answer. Fine, students. So like this you have to find the volume of any given solid object. Okay. If it is cuboid, then length into breadth into height, and if it is cube, then side into side into side. And please remember that there will be cubic unit in a volume. And just recall the units of perimeter. Perimeter, I told you the single unit will come always. Then in area, always the square unit will come, and in volume, always the cubic unit will come. Clear, students? Yes, students. See now, this is your question number 3. It is find the volume of the cuboids whose dimensions are as follows. That means 3 parts are there and all the 3 parts are the shapes of cuboid and its dimensions are already given in the question. We only have to put these dimensions in the formula and find out our answer. So see, first of all, in A part, you will be putting the formula volume of cuboid and it is length into breadth into height. So put the values. Length is 12 centimeter, breadth is 10 centimeter and the height is 2 centimeter. Now we will multiply it. So 12 into 2 is equals to 24 and 24 into 10 is equals to 240 then cubic centimeter. Please remember that if it is volume, then the cubic unit will come. Then similarly B part, volume of cuboid is equal to length into breadth into height, our formula. Now the values which are given is 15 meter into 3 meter into 1 meter.
Now multiply. 15 into 3, 45, and 45 into 1 is again 45, and cubic meter answer. Okay. Now the C part, it is again the dimensions of cuboid is given. So we will put the formula of volume of cuboid, and again it is length into breadth into height. So the length is 7 meter, breadth is 8 meter, and the height is 9 meter. 7 into 8 is equals to 56, and 56 into 9 is equal to 504 cubic meter answer. Okay students, so like this you have to do question number 3. Nothing difficult, only put the formula and then place the values which is given in the question in the formula and then multiply it to find the answer of the volume of cuboid. Okay. Now question number 4 is find the volume of the cubes whose edges are the following. Now these are the edges of cube. Okay. So only one side will be available there and we have to find the volume of cube. So simply here also we have to put the formula. So the volume of cube, as I told you, the formula here will be side into side into side. Okay, and the side in this part is given as 9 meter. So 9 meter will be multiplied by 9 meter and 9 meter. So 9 nines are 81 and 81 into 9 is equals to 729. Again it is volume, so we will put the cubic unit which is given meter. Fine. See B part. Again in all the parts you have to do the same thing. Volume of cube. So it will be side into side into side. And then put the value which is given, and in B part it is given as 5 meter. So 5 meter into 5 meter into 5 meter. So it will be 125 cubic meter answer. Then next again C part, volume of cube. So it will be our formula again, firstly side into side into side, and it will be 8 meter into 8 meter into 8 meter. So 8 8s are 64 and 64 into 8 is equals to 512 cubic meter answer. Then last part, volume of cube. Again side into side into side, and the value which is given in D part is 11 meter. So 11 meter will be multiplied by 11 meter and again by 11 meter. So 11 into 11 is 121 and 121 into 11 is equals to 1331. So 1331 cubic meter is the answer of D part. So it is again a simple question where only you have to put the formula of volume of cube and then place the value which is given in all the parts and then find your answer. Okay. Yes students, let us now move on to question number 5th and question number 6th. Firstly question number 5th, it is a room is 4 meter long, 3 meter broad and 9 meter high. एक रूम है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है. अगर एक रूम की लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है और पूछा गया है कि उसकी वॉल्यूम क्या होगी, तो लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दैट द शेप ऑफ द रूम इज cuboidal. So here we will put the formula of volume of cuboid. So firstly you will mention the length of room. So the length of room is equal to 4 meter. Then the breadth of room. So breadth of room is given here as 3 meter, and then the height of room which is mentioned here as 9 meter. So this is the length, breadth and height, and we have to find the volume of room. So volume of room, so room is in cuboidal shape, so its volume will be length into breadth into height. So multiply 4 meter into 3 meter into 9 meter. We have placed the value of length, breadth and height in the formula. Now multiply 4 3s are 12 and 12 9s are 108 cubic meter. So this will be the volume of room, your answer.
Fine students. See now question number 6. What is the volume of a cube of side 10 centimeter? हमें एक क्यूब का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है जिसकी साइड गिवन है 10 centimeter. So simply you will write firstly side of cube. So side of cube is given here as 10 centimeter, and then we will be writing the formula volume of cube. So the formula of volume of cube is side into side into side, right? So the value which is given here of side is 10. So 10 centimeter multiply by 10 centimeter multiply by again 10 centimeter. So 10 into 10 is 100 and 100 into 10 is equals to 1000, and since it is volume, so we will put cubic and then the unit which is given is centimeter. Therefore the volume of a cube of side 10 centimeter is 1000 cubic centimeter. Answer. Okay, so very simple questions are there. Only put the formula, place the values and find the answer. Now we are on the last question of exercise 11D, that is question number 7. Sony has a gift box of length 28 centimeter, breadth 16 centimeter and height 12 centimeter. सोनी के पास में एक गिफ्ट बॉक्स है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है. अगर लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है दैट मीन्स वो जो गिफ्ट बॉक्स है वो क्यूबॉइडल शेप के अंदर है. ओके, और हमें उस गिफ्ट बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. सो सी, first of all you will write length of a gift box. So it is given as 28 centimeter. Then you will mention the breadth of a gift box. Okay, so which is given as 16 centimeter, and then you will mention the height of a gift box which is given in the question as 12 centimeter. Okay, simply now we have to find the volume of a gift box. So as I told you that length, breadth and height are given, that means the shape is cuboidal, so the formula will be length into breadth into height. So it will be 28 centimeter into 16 centimeter into 12 centimeter. After placing the values we will multiply it. So when you will multiply 28 into 16 into 12, you will get the answer 5376 cubic centimeter. So this is the volume of that gift box which was with Sony. Is it clear students? So here we have completed all the questions of exercise 11D. Here we have finished our exercise 11D. Now with this we have covered the topic perimeter, area and volume. Okay students, now only one topic is remaining, that is maps. There is no such questions, different exercise related to this topic map. Only some statements are given in the book which I will be explaining you. So let us move on to our last topic, maps, and just pay attention that what is there related to maps in your book. Students, now see we are on our topic maps. As I told you that there is no separate exercise for this topic map, but two maps are given in your book on page number 222, and related to that map some questions are given. So we have to read those questions, and by looking the maps we will answer that what is there in these questions. Okay, so see, the topic is, first map is related to a girl who is Alice. So this is a girl who is Alice. She is lost. ये girl lost हो चुकी है. If she had the map shown, जो map यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अगर ये map उसके पास होता, so she would have known where she was. तो उसको पता होता कि वो कहाँ पर है. Help her by answering these questions. हमें उसकी help करनी है. कुछ questions जो है वो map के नीचे given है, उन क्वेश्चंस का रिप्लाई देना है हमको और इस गर्ल की हेल्प करनी है. आप इस मैप को अच्छे से देखिए और हम वन बाय वन क्वेश्चंस को रीड करेंगे. देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज क्लोजर टू द हाउस. ये हाउस है और हाउस से क्या क्लोज है. ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, द पॉन्ड और द पिकनिक स्पॉट. ये देखिए, अब आप हाउस के पास में देखिए, यहाँ पे पॉन्ड है और ये है पिकनिक स्पॉट. तो आप खुद बता सकते हैं कि हाउस से नियर क्या है, पॉन्ड है या पिकनिक स्पॉट है. ऑब्वियसली हाउस के पास में क्या है, पॉन्ड है.
तो जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा उसका आंसर हो जाएगा द पॉन्ड। ये एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक में नहीं करनी है, पर्टिकुलर एक्सरसाइज नहीं है, ये सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप बुक में ही इस क्वेश्चन के सामने इसका आंसर लिख देंगे। ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे पेज नंबर 222 पर आपकी मैथ्स बुक में। तो आप इसी क्वेश्चन के आगे, क्वेश्चन मार्क जो लगा हुआ है इसके आगे आप आंसर लिख देंगे द पॉन्ड, क्योंकि ऑप्शन है विच इज क्लोजर टू द हाउस, क्या क्लोजर है, पॉन्ड या पिकनिक स्पॉट। सो द आंसर विल बी द पॉन्ड बिकॉज यू कैन सी दैट पॉन्ड इज क्लोजर देन द पिकनिक स्पॉट. Okay, so here I have cleared the first question. Now let us move on to the second question. The second question is, which trial will Alice take to get the people tree from the picnic spot? अगर एलिस को पिकनिक स्पॉट से पीपल ट्री की तरफ जाना है तो वो कौन सा ट्रायल मींस रास्ता चूज करेगी? तो आप देखिए पिकनिक स्पॉट से पीपल ट्री की तरफ एक ही वे जा रहा है, एक ही रास्ता जा रहा है जिसका नाम है मड पाथ. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 के आगे आप अपनी बुक में ही मेंशन कर देंगे आंसर, यहाँ आ जाएगा मड पाथ. Okay, students. Then we will move on to the third question. And the third question is, on which trial does the pond lie? Pond जो है वो कौन से ट्रायल के ऊपर है? ओके, तो ये देखिए इस ट्रायल का नाम आपको पता चल रहा है. इस ट्रायल का क्या नाम है? रेड ट्रायल. फाइन. सो जो पॉन्ड है हमारा इस पिक्चर के अंदर, मैप के अंदर, वो रेड ट्रायल के ऊपर है. तो यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क के आगे आंसर लिख देंगे रेड trial. So 3 questions are there related to this picture, this map. So the first answer is the pond, second answer is mud path, and the third answer is red trial. Okay students, I hope this first map is clear to you. Now, let us move on to the next map. It is also given on the same page. This map is given on the same page, page number 222. And these are the questions and the answers are also given, which are mentioned on page number 223 of your maths book. So please pay attention on this map first. See what is written. Now let us observe the map given below. हमें इस map को देखना है. आप सबसे ऊपर देखिए मूवी स्टूडियो है, और मूवी स्टूडियो से जब हम राइट हैंड साइड में जाते हैं 6 किलोमीटर, ओके, 6 किलोमीटर तक जब आप चलेंगे मूवी स्टूडियो से तो आपको मिलेगा स्टेडियम. स्टेडियम से जब 6 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा एयरपोर्ट. ओके, और मूवी स्टूडियो के लेफ्ट हैंड साइड अगर आप चलेंगे 5 किलोमीटर तो आपको मिलेगा कैसल. कैसल से जब आप 5 किलोमीटर और आगे चलेंगे तो आपको मिलेगा कॉलेज कैंपस. कॉलेज कैंपस से जब 4 किलोमीटर आगे चलेंगे तो आपको मिलेगा हार्बर. हार्बर से जब आप 1 किलोमीटर आगे चलेंगे तो आपको मिल जाएगा एयरपोर्ट. इसी तरीके से कैसल से आप अगर राइट हैंड साइड जाएंगे 2 किलोमीटर तो आपको मिल जाएगा जू. जू से जब आप स्लैंटिंग जाएंगे 7 किलोमीटर तो आपको वापस मिल जाएगा एयरपोर्ट. और मूवी स्टूडियो से अगर नीचे की तरफ आएंगे आप 2 किलोमीटर तो आपको जू मिल जाएगा. तो ये एक मैप गिवन है जिसको मैंने आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है. अब हम देखेंगे इसके रिलेटेड क्वेश्चन. देखिए, फ्रॉम द मैप वी कैन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हाउ फार इज द एयरपोर्ट फ्रॉम द जू? जू से हमारा एयरपोर्ट कितने डिस्टेंस पर है? तो आप देखिए ये है हमारा जू, और जू से जो स्लैंटिंग लाइन जा रही है वो सीधा एयरपोर्ट की तरफ जा रही है. तो ये डिस्टेंस कितना गिवन है? 7 किलोमीटर. बट स्टूडेंट्स आप नोटिस करेंगे कि आपकी बुक में गिवन है द एयरपोर्ट इज 8 किलोमीटर फ्रॉम द जू. 8 किलोमीटर नहीं है यहाँ पर, बाय मिस्टेक 8 किलोमीटर रिटर्न है. आप इसको कट करके 7 किलोमीटर कर देंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं एयरपोर्ट जो है जू से कितने डिस्टेंस पर है. ये जो लाइन यहाँ पर शो हो रही है उसके ऊपर डिस्टेंस given है. So it is mentioned 7 kilometer. So that means the airport is 7 kilometer from the zoo. So please correct it in your book. Then move on to the next question. Which is closer to the college? College के पास में क्या है? The harbor or the castle? पहले हमें देखना पड़ेगा कॉलेज कहाँ है. ये रहा कॉलेज. अब कॉलेज के पास में हार्बर है या कैसल है, तो हम दोनों का डिस्टेंस देखेंगे. देखिए कॉलेज से हार्बर का जो डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर है, और कॉलेज से जो कैसल का डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है. तो आपको खुद क्लियर है 5 और 4 में से स्मॉलर क्या होता है? 4. दैट मीन्स कॉलेज कैंपस से हार्बर क्लोजर है और कैसल दूर है. ओके, सो आंसर आप देखिए द हार्बर इज क्लोजर टू द कॉलेज. ओके स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? नाउ सी,
द थर्ड क्वेश्चन, विच इज द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम द कैसल टू द एयरपोर्ट। अगर हमें कैसल से एयरपोर्ट की तरफ जाना है तो कौन सा रूट स्मॉलेस्ट होगा। तो देखिए पहले तो हम देखेंगे कि कैसल से एयरपोर्ट की तरफ कौन से रूट जा रहे हैं। तो कैसल से एयरपोर्ट जाने के लिए पहले हम क्या कर सकते हैं, या तो कॉलेज कैंपस जाएंगे, कॉलेज कैंपस से हार्बर जाएंगे और फिर हार्बर से एयरपोर्ट जा सकते हैं, या फिर कैसल से हम जू की तरफ जा सकते हैं और जू से हम एयरपोर्ट की तरफ जा सकते हैं। राइट, तो हम देखते हैं कौन सा रूट जो है वो हमारे लिए इजी रहेगा। और एक काम आप और कर सकते हो, कैसल से आप मूवी स्टूडियो पर जाइए, मूवी स्टूडियो से जू पर आइए, फिर जू से आप एयरपोर्ट आइए, या फिर कैसल से मूवी स्टूडियो, मूवी स्टूडियो से स्टेडियम और स्टेडियम से एयरपोर्ट। तो ये तो आपको खुद को समझ आ रहा है कि दिस इज द लॉन्गेस्ट रूट, ये तो बहुत ही लंबा रास्ता पड़ जाएगा अगर हम कैसल से मूवी स्टूडियो गए, मूवी स्टूडियो से स्टेडियम गए, स्टेडियम से हार्बर आए, सो दैट दिस विल बी लॉन्ग। एंड कैसल से अगर हम मूवी स्टूडियो गए, मूवी स्टूडियो से जू आए और जू से आगे एयरपोर्ट में गए तो ये भी लॉन्ग पड़ जाएगा। तो हम दो रास्ते चेक कर सकते हैं, एक तो कैसल से जू और जू से एयरपोर्ट, और दूसरा कैसल से कॉलेज कैंपस, कैंपस से हार्बर और हार्बर से एयरपोर्ट। तो हमें इनका डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप देखिए कैसल से हम क्या कर सकते हैं, कॉलेज कैंपस की तरफ अगर आते हैं तो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। कॉलेज कैंपस से हार्बर जाएंगे तो 4, तो 5 ये हो गया और 4 ये हो गया, तो 5 + 4 इज 9, 9 + 1 इज 10। तो अगर कैसल से हम कॉलेज कैंपस होते हुए, हार्बर होते हुए अगर एयरपोर्ट जाते हैं तो हमें 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। दूसरा वे देखिए, अगर हम कैसल से जू की तरफ जाते हैं तो पहले 2 किलोमीटर लेना पड़ेगा हमको, और जू से अगर हम डायरेक्ट एयरपोर्ट आ जाते हैं तो 7 किलोमीटर यहाँ लेना पड़ेगा। सो 7 + 2 इज इक्वल टू 9 किलोमीटर। ओके, यहाँ से कैसल से अगर जू होते हुए हम एयरपोर्ट आ रहे हैं तो 9 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। अगर कॉलेज कैंपस और हार्बर को क्लियर करते हुए आ रहे हैं तो हमें 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। ओके, सो द शॉर्टेस्ट रूट विल बी फ्रॉम zoo. Okay, see, the shortest route from the castle to the airport is via zoo. Via means zoo के रास्ते होते हुए अगर आप एयरपोर्ट की तरफ आओगे तो वो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पड़ेगा। ओके, तो कैसल से पहले जू और जू से एयरपोर्ट। फाइन, सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस मैप। तो मैप के अंदर बेसिकली कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ मैप को देखना है और अगर मैप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो वो आपको सॉल्व करने हैं। आई होप बोथ दीज मैप्स आर क्लियर टू यू। फाइन, now 2 more topics are there, that is scale of a map and direction. So let us move on those 2 topics also. Yes students, pay attention now. It is now scale of a map. To show places on a map, we have to shrink the actual distances. अगर हमें मैप के ऊपर एक्चुअल डिस्टेंस को प्लॉट करना है, शो करना है, तो हमें एक्चुअल डिस्टेंस को क्या करना पड़ता है, श्रिंक करना पड़ता है। श्रिंक मतलब छोटा करना पड़ता है। So to find the actual distance from a map, it is important that a map have a scale. तो अगर हमें actual distance मैप के ऊपर शो करना है तो हमें मैप के ऊपर एक स्केल प्लॉट करनी पड़ेगी। ओके, उस स्केल को ध्यान में रखते हुए ही हम मैप को शो करते हैं। सी, द स्केल ऑफ अ मैप गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस ऑन अ मैप एंड द एक्चुअल डिस्टेंस। उस स्केल से हमें रिलेशनशिप पता चलता है कि मैप के ऊपर कितना डिस्टेंस है और एक्चुअल डिस्टेंस कितना है। Thus, measuring the distance on a map gives the actual distances on the ground. तो जब हम मैप के ऊपर मेजर कर लेते हैं डिस्टेंस को तो हमें ग्राउंड का डिस्टेंस भी पता चल जाता है। Like, see, on a map 1 centimeter equals to 500 kilometer on the ground. अगर मैप के ऊपर 1 सेंटीमीटर है तो ग्राउंड के ऊपर वो 500 किलोमीटर होगा। आपको सबको पता है मैप छोटा होता है। अब मैप के ऊपर आप किलोमीटर जितना जो ग्रेटर डिस्टेंस है वो तो आप शो नहीं कर सकते, तो मैप के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, सेंटीमीटर की स्केल के अंदर ही शो कर सकते हैं। स्मॉलर यूनिट मैप पे शो हो सकती है लेकिन ग्रेटर यूनिट मैप के ऊपर शो नहीं हो सकती। तो अगर कोई डिस्टेंस है जो कि ग्राउंड के ऊपर तो 500 किलोमीटर है, लेकिन अगर हम उसको मैप पे शो कर रहे हैं तो हम उसको 1 सेंटीमीटर से ही शो कर रहे हैं। हम मान रहे हैं कि मैप के ऊपर 500 किलोमीटर का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर। If the distance between two places is 3 centimeter, अगर दो places हैं
और दो प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है, इट मीन्स दैट द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज 1500 किलोमीटर। अगर मैप पे 3 सेंटीमीटर है तो एक्चुअल 1500 होगा। कैसे? देखिए यहाँ पर मैंने शो करा है, 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 500 किलोमीटर, तो 3 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा? देखिए 1 का मेजरमेंट गिवन है, 3 का निकालना है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को आप 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 5 15 एंड देन 2 0, so 3 centimeter means 1500 kilometer on map. Okay, so this is written on the map as, तो मैप के ऊपर स्केल कैसे शो होगी? 1 centimeter is equals to 500 kilometer, whereas 3 centimeter is equals to 1500 kilometer. Okay, so this was all about the scale of the map. Now let us move on to the last topic. It is directions. Now एलिस एंड हर फादर वर लॉस्ट इन द जंगल। एलिस और उसके फादर एक जंगल में लॉस्ट हो गए। लकीली हर फादर हैड अ कंपास। उसके फादर के पास में एक कंपास था एंड न्यू दैट देयर वाज अ सिटी टू द नॉर्थ। और कंपास के अंदर डायरेक्शन देखने से उनको पता चल गया कि एक सिटी नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ है। दैट इज हाउ दे फाउंड देयर वे टू द सिटी। और उस कंपास की हेल्प से उनको अपना रास्ता ढूंढने में मदद मिली। Here is what a compass look like. यहाँ पर आपको पिक्चर गिवन है और बताया गया है कि कंपास कैसा होता है जिससे हमें डायरेक्शन पता चल जाते हैं। ये जो रेड मार्क आपको दिख रहा है, जहां पर रेड मार्क होता है वो डायरेक्शन की तरफ जाना होता है। ओके, उससे डायरेक्शन का पता चल जाता है। अ कंपास शोज द डायरेक्शन। कंपास से कौन से डायरेक्शन पता चलते हैं? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। एंड दे आर मार्क्ड बाय द लेटर। शॉर्ट में लेटर्स में मार्क होता है। नॉर्थ मीन्स एन, east means E, S means south and W means west. Okay, so NESW respectively. So this is all about your chapter number 11. Now we have covered all the 4 topics, that is perimeter, area, volume, and now finally we have covered the topic maps also. मैप से रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं बेटा, मींस जो भी टॉपिक 222 एंड 223 पेज पर आपके पास में गिवन है वो आपको अपनी बुक में ही रखने हैं। इसीलिए मैंने आपको बुक के पेजेस से ही एक्सप्लेन करा है। ये कुछ भी वर्क आपको अपने नोटबुक में नोट डाउन नहीं करना है। Fine students, so here we have completed this chapter, and with this chapter we have completed our course of half yearly examination also. So now we have covered all the 5 chapters of half yearly examination. Now that's all for today, and then I will be meeting you back in my next online class where I will be starting the revision classes for you all. Now all the lectures will be related to the revision of your half yearly examination. Okay students, so that's all for today. Now I will meet you back in next class with some revision lectures. Till then, you students, please take good care of yourself. Thank you so much.